Hello everyone. In this video, we'll start from the chapter 1 of Geography, India, Physical Environment. And the first chapter will be over in like 10-15 minutes because we are doing it from a perspective that only the important things or the relevant things which can come up in the exam. So we'll just try to know that, and to cover NCERTs is the most important factor if you have any chance in clearing civil services. Mains you can clear it, but prelims I'm talking about it. So without wasting much time, let's start. So let me just adjust it. So the first thing we'll see here is the latitudinal extent of India. Latitudinal extent of India. So now if we include the Andaman and Nicobar Islands as well, the latitudinal extent goes from 6 degree 45 minutes up to 37 degrees 6 minutes, right? And if we don't include the Andaman and Nicobar Islands, it stretches from 8 degree 45 minutes rather than 6 degree 45 minutes. So this is one thing. Now if we talk about west to east and the north to south, both has a gap of 30 degrees. Both of them has a gap of 30 degrees, but there is a difference. The west to east extent is 2933 kilometers and north to south extent is 3214 kilometers. So therefore the north to south extent is greater than the west to east extent despite both of them being 30 degrees. So this is a tricky question, both of them being 30 degrees, but still the north to south extent is more than the west to east extent. Okay, now let's look at the coastline. So the coastline is, if we just include the mainland coastline, so it's just 6100 kilometers. But if we include the both islands, that is the Andaman Nicobar Island and the Lakshadweep Island, it comes out to be 7517 kilometers, right? Now let's look at the area. ये सवाल एरिया से रिलेटेड सवाल एग्जाम में भी आया. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ द लैंड एरिया, राइट. सेकेंड, उसका जो एरिया इट स्टैंड्स अबाउट 3.24 मिलियन स्क्वायर kilometers, right? And this 3.24 million square kilometers or the India's total land area is about 2.4% of the world's land area, right? Now there is one more thing जो सवाल आया भी है कि नॉर्थ और साउथ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कौन से रीजन में फॉल करते हैं, राइट? तो लेट्स राइट इट डाउन इज नॉर्थ एंड साउथ. नॉर्थ साउथ, the northern part comes under the subtropical region and the southern part comes out to be under tropical region. Why? Because it is closer to the equator. Right? So that's it with this. No, just before ending, I'll just try to make my own questions. For instance,
Let's look at the Tropic of Cancer. We'll write it down as Tropic of Cancer. So the Gujarat's Gandhinagar is below, right? Bhopal is below, MP's capital, right? Ranchi is also below, and these are all, you know, फॉलोइंग इन द सेम लाइन, राइट? अभी तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड कोलकाता इज ऑल्सो बिलो, बट ये इन लाइन्स के बीच में है. ये इन लाइन के, इसके गांधीनगर, भोपाल, रांची इसके नीचे है कोलकाता, राइट? इफ यू टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इट कट्स टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विच आर त्रिपुरा and Mizoram, and both of their capitals are above the Tropic of Cancer, that is Agartala and Aizawl, right? If you talk about the states, Gujarat plus Rajasthan, जब आप मैप देखोगे और ये यहीं पे देखना, आपको यूपीएससी घुमा देगा, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, बिकॉज पीपल टेंड टू ओवरलुक, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट ऑफ राजस्थान गेट्स कट बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहीं पे वो सवाल बनेगा, ध्यान रखना. तो गुजरात प्लस राजस्थान प्लस एमपी प्लस छत्तीसगढ़ प्लस झारखंड प्लस कोलकाता, ओ सॉरी, plus West Bengal plus Tripura plus Mizoram. So how many states if you look at it? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In total, 8 states gets cut by the Tropic of Cancer. ठीक है? And there are few more things इसी से related हैं. If you look at the map regarding Puducherry, so Puducherry is under, पुडुचेरी के 3 स्टेट्स के अंडर आती है. वन इज यानम ऑफ आंध्र प्रदेश प्लस कराईकाल ऑफ तमिलनाडु प्लस माहे ऑफ केरल, राइट? बस अगर आपने ये सब फर्स्ट चैप्टर में, इफ़ यू क्या बोलते हैं, रिमेंबर दीज फैक्ट्स, तो पहले चैप्टर से यूपीएससी पहले आपको नहीं घुमा सकता. दिस इज़ ऑल जो मैंने मैथ में भी देख के आपको बता दिया, और वैसे भी आपको थ्योरी भी पढ़ा दी. सो दैट्स इट विद दिस वीडियो. ध्यान रखिएगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.